Bismillahirrahmanirrahim. Now let's move towards paragraph number 8. I shall have no time to waste in regret for longing. There is so much to see. The first day I devoted to my friends, animate and inanimate. The second revealed to me the history of man and nature. Today I shall spend in the workaday world of the present amid the haunts of man going about the business of life. And where can one find so many activities and conditions of man as in New York? So the city becomes my destination. पैराग्राफ की रीडिंग के बाद डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग. वेस्ट, बर्बाद करना, पामाल करना, ज़ाया करना. मिस यूज़ और यू कैन से कंज्यूम. रेग्रेट, पछताना. मॉर और यू कैन से लेमेंट. एनिमेट, जिंदा. एक्टिवेट, स्टिमुलेट और यू कैन से मूव. हॉन्ट, आमदोरफ्त, विजिट, फ्रीक्वेंट. एमिड, दरमियान में. मिड और यू कैन से अमंगेस्ट. डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग के बाद अब हम इसकी ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं. आई शैल हैव नो टाइम टू वेस्ट. मेरे पास वक्त ज़ाया करने के लिए नहीं होगा. इन रेग्रेट फॉर लॉन्गिंग, हसरतों की मलाल में, इनके ख्वाहिशों के अफसोस के अंदर मेरे पास वक्त ज़ाया करने के लिए नहीं होगा. ये भी इंसान के ऊपर तंज किया जा रहा है कि हम ख्वाहिशों के अंदर ही अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं. वो कहती है कि मैं ख्वाहिशों के पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी. क्यों? बिकॉज देयर इज़ सो मच टू सी. देखने के लिए बहुत कुछ है. I shall have no time to waste in regret for longing. There is so much to see. मेरे पास हसरतों के मलाल में कोई वक्त ज़ाया करने के लिए नहीं होगा क्योंकि देखने के लिए बहुत कुछ है. The first day I devoted to my friends. पहला दिन मैंने अपने दोस्तों के लिए वक्फ कर दिया. Animate and inanimate, जानदार और बेजान. आप वो तीनों चीज़ों को तीनों दिनों को रिपीट कर रही है, ठीक है, और कहना ये चाह रही है कि उसके जो दोस्त हैं वो जानदार भी हैं और बेजान चीज़ें भी उसकी दोस्त हैं. द फर्स्ट डे आई डिवोट टू माई फ्रेंड्स, एनिमेट एंड इनएनिमेट. पहला दिन मैं अपने जानदार और बेजान दोस्तों के लिए वक्फ कर दिया. द सेकेंड रिवील टू मी, दूसरे दिन ने मुझ पर जाहिर किया क्या चीज़? द हिस्ट्री ऑफ मैन एंड नेचर, इंसान और कुदरत की तारीख़. The second day revealed to me the history of man and nature. दूसरे दिन मुझ पर इंसान और कुदरत की तारीख़ ज़ाहिर हुई. Today I shall spend in the work a day world of the present. आज का दिन मैं मौजूदा दौर के मामूलात में गुजारूंगी. Amid the haunts of men, उन पुरहजूम लोगों के दरमियान, going about the business of life, जो कारोबारी ज़िंदगी के लिए आते जाते हैं. Today I shall spend in the work-a-day world of the present amid the haunts of men going about the business of life. आज का दिन मैं मौजूदा दौर के मामूलात में गुजारूंगी, उन पुरहजूम लोगों के दरमियान जो कारोबारी ज़िंदगी के लिए आते जाते हैं. And where can one find? कोई भी शख्स कहाँ पा सकता है क्या चीज़? So many activities and conditions of man as in New York. इंसान की इतनी ज़्यादा सरगर्मियाँ और रंग ढंग सवाए न्यूयॉर्क शहर के. सो द सिटी बिकम्स माई डेस्टिनेशन. चनांचे ये शहर मेरी मंजिल मकसूद बन चुका है. एंड वेयर कैन वन फाइंड सो मैनी एक्टिविटीज़ एंड कंडीशंस ऑफ मैन एज इन न्यूयॉर्क. सो द सिटी बिकम्स माई डेस्टिनेशन. कोई भी शख्स इंसान की इतनी ज़्यादा सरगर्मियाँ और रंग ढंग कहाँ पा सकता है सवाए न्यूयॉर्क शहर के. चनांचे ये शहर मेरी मंजिल मकसूद बन चुका है. ट्रांसलेशन के बाद अब हम इसकी सिंपल इंग्लिश पढ़ते हैं. आई शैल हैव नो टाइम टू वेस्ट इन रेग्रेट फॉर लॉन्गिंग. देयर इज सो मच टू सी. तो इसकी सिंपल इंग्लिश है, हेलन केलर सेज दैट शी वुड नॉट वेस्ट इवन अ सिंगल मोमेंट इन द डिज़ायर.
तो नो टाइम के लिए हम कहेंगे नॉट अ सिंगल मोमेंट, और लॉन्गिंग के लिए डिज़ायर का वर्ड यूज़ हुआ। द नेक्स्ट लाइन इज द फर्स्ट डे आई डिवोटेड टू माई फ्रेंड्स एनिमेट एंड इनएनिमेट। She says that she devoted the first day of her sight to her living and non-living friends. Animate के लिए living और inanimate के लिए non-living के word use किए गए। Next है the second revealed to me the history of man and nature. Simple English है the second day disclosed the history of man and nature. Today I shall spend in the work-a-day world of the present amid the haunts of man going about the business of life. Simple English, however, she intends to spend the third day of her sight in visiting to the places frequently visited by the people where she would see them busy in their routine business. The next line is, and where can one find so many activities and conditions of men as in New York? So the city becomes my destination. She asked where one could find these things. Then she replied herself that New York would be one of such places where she would observe so many human activities and affairs of life. Thus New York would become her ultimate goal. तो यहाँ पर हमने सेंटेंसेस को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। सिंपल इंग्लिश के बाद अब इस पैराग्राफ के अंदर आने वाले बॉक्स क्वेश्चन को गो थ्रू करते हैं। क्वेश्चन है, वाई हैज़ शी नो टाइम टू वेस्ट इन लॉन्गिंग्स? अपनी ख्वाहिशात पर ज़ाया करने के लिए उसके पास वक्त क्यों नहीं है? तो आंसर है, शी इज गिवन 3 days टू सी। She has no time to waste in longings because she wants to observe maximum beauty of nature instead of wasting precious time in longings. जवाब है कि उसे देखने के लिए 3 दिन दिए गए थे। उसके पास वक्त नहीं है कि वो ख्वाहिशात में उसे ज़ाया करे, क्योंकि वो चाहती है कि बजाय ख्वाहिशात में वक्त ज़ाया करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फितरी खूबसूरती का मुशाहदा करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा पैराग्राफ नंबर 8 भी अपने अख्ताम को पहुँचता है।